robustness. The term robustness actually means that the stability of the test procedures or the statistical models under the specific assumption for the statistical analysis. Actually robustness basically एक some sort of condition है, ये some sort of tool है, you can say that, कि जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो अंडर स्टडी मॉडल है या जो आपका अंडर स्टडी स्टैटिस्टिक है वो आपको reliable answer provide कर रहा है कि नहीं कर रहा. That is some sort of condition, or you can say that some sort of a tool which helps us to find the stability of our method or our confidence intervals or our estimation, some sort of this one. In simple words, हम layman's के लिए जब हम इसको define करते हैं तो you can say that the robust statistic is a measure which does not affect by the outliers. Generally ये consider किया जाता है कि जो outliers जब data में आते हैं तो ये हमारी test statistic को disturb करते हैं या हमारी model assumption को disturb करते हैं. तो generally इसी हवाले से जब हम इसको आम अल्फाज में एक्सप्रेस करते हैं तो आउटलायर के हवाले से देखते हैं कि अगर आउटलायर्स की वजह से हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक डिस्टर्ब नहीं होता तो वी से दैट इट इज़ अ रोबस्ट स्टैटिस्टिक. तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द रोबस्टनेस. सपोज दैट वी हैव टू डाटा सेट्स. लेट्स से द फर्स्ट डाटा सेट दैट इज वेरी सिंपल डाटा सेट 1 2 3 5 6 and the second data actually consists of the observation 1 2 3 4 5 and 1000. So we have two data sets. We take the simple mean and median of these two data sets. So we see that if we take the mean and the median of the first data set, that is 3.5 in both in the first data set. तो पहले data set का जो mean है और median है वो 3.5 है. While the mean and the median for the second data set, mean जो है that is actually 169 and median is 3.5. So you can see that मीडियन जो है वो हमें स्टेबल रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है. दोनों डेटास को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो मीडियन आपको स्टेबल रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है. सो वी कैन से दैट इन दिस सिनेरियो मीडियन इज ए रोबस्ट स्टैटिस्टिक, रोबस्ट मेजर टू मेजर द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी मौजूद है, जबकि मीन जो है इसमें हमारे पास स्टेबिलिटी मौजूद नहीं. पहले डाटा सेट में हमारे पास उसकी वैल्यू आई है 3.5, दूसरे डाटा सेट में इसकी वैल्यू है 169. तो स्टेबिलिटी नहीं है मीन की वैल्यू में. तो मीडियन जो है वो स्टेबल वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है. तो अगर हम कंपेयर करें दो मेजर्स को तो वी से दैट मीडियन इज ए मोर रोबस्ट मेजर टू मेजर द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा. वजह बड़ी ऑब्वियस है, आपने पहले भी इसको देखा हुआ है कि मीडियन जो है दैट डज नॉट इफेक्ट बाय द आउटलायर्स, जबकि मीन जो है दैट इज अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स. सिमिलरली अगर हम डिस्पर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो IQR interquartile range actually that is more robust than the standard deviation, because IQR it based on the values of the median और standard deviation जो है ये हमें मीन की बेस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं. तो अगर हम रोबस्टनेस के हवाले से देखें इन टर्म ऑफ डिस्पर्शन तो IQR जो है ये हमें ज़्यादा रोबस्ट मेजर प्रोवाइड करता है. और जनरली जब रोबस्ट स्टैटिस्टिक हम यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा यूज़फुल उस सूरत में होता है जब हमारे पास स्क्यूड डेटा हो या लॉन्ग या हैवी टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास हो. तो ऐसी सूरत में हमारे पास रोबस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है. और अगर हमारे पास सिमेट्रिकल डेटा हो तो फिर हम नॉन रोबस्ट स्टैटिस्टिक की तरफ जाते हैं. तो नॉन रोबस्ट स्टैटिस्टिक बेसिकली कन्वेंशन मेथड ही है हमारे पास जिसको हम यूज़ करते हैं. जनरली देयर आर टू मेथड्स टू मेजर द रोबस्टनेस ऑफ एन एस्टिमेटर. One method is known as the influence function, जिसको हम IF से रिप्रेजेंट करते हैं. Influence function basically of the local stability, and the other method which is used for the robustness that is known as the breakdown point for the global reliability. IF actually measures the effect of the single observations, whereas BDP measures the fraction of the contamination. Harrell-Davis quantile estimator is an example of the IF, while the Huber location M estimator is an example of the breakdown point.